students, welcome on my video. In previous lecture we discussed what is a diagram and its type. I hope you all are understood. And in previous lecture we also discussed first type of one dimensional diagram. What is the first type, students? Simple bar diagram. Okay, so I hope you all are understood how to draw simple bar diagram. Okay, so let me see. Today we see first of all new types, multiple bar diagram. That means second subtype of one dimensional diagram is multiple bar diagram, and multiple bar diagram it's also known as adjacent bar diagram. Okay, उसको हम लोग सेकंड कौन से नेम से भी जानते हैं, तो adjacent bar diagram means multiple, वन कॉलम नहीं होगा बट मल्टीपल, बहुत सारे, वन मोर देन वन कॉलम हमारे पास होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इट्स नोन एज अवर multiple bar diagram. Okay, so students, generally what is the difference between simple bar diagram and multiple bar diagram? So in simple bar diagram we have only one type of information and represent on graph, but in multiple bar diagram we have more than one type of information, like number of boys and number of girls. We have two types of columns. Okay, and these two types of column we represent on this diagram. Okay, so let me draw the multiple bar diagram. So first of all we have three columns: faculty, number of boys and number of girls. So faculty in commerce stream 700 students, in commerce 600 girls are कॉमर्स स्ट्रीम. ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि टू टाइप्स की इंफॉर्मेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द we start the draw the diagram. So this one is our y axis and this one is our x axis. Okay, and here we mention 0. So first of all we mention the faculty on our x axis. So how many faculties we have? 6 types. So here we mention faculty on x axis. So commerce, science, engineering, arts, medical and law. So here I mention only first letter of the faculty. The first commerce, that means we mention only C. Second one is science, so only mention S. Then engineering E. Then arts only A. Then medical, that means denoted only M. And last one is law, that means L. Okay, so on x axis we mention the faculty, and now on y axis we mention the number of students. Okay, on y axis what we mention, students? So number of students. So what is the minimum number of students in given two column? 100, and maximum is 700. That means we mention on y axis up to 700 students. So 0 to start करेंगे, 0 से 100, then 200, then 300 students, 400, 500, then 600, and last one is 700. Why? Because maximum number of students is 7 from the two columns and 800. ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स की, जैसे हमने सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ किया था वैसे अब हम लोग ये मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स. इन कॉमर्स स्ट्रीम नंबर ऑफ बॉयज आर 700 and number of girls are 600. So before starting the diagram we denoted number of boys and number of girls different sign. So we mention boys like cross line and we mention girls in circles. ओके, सो हम लोग इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्रॉस लाइन वाला जो कॉलम है वो क्या है, किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर बॉयज. एंड सर्कल वाला जो कॉलम होगा वो किसके लिए स्टूडेंट्स? गर्ल्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट 700 and 600. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द बॉयज इन कॉमर्स स्ट्रीम. सो we prepare a column like this. Okay, so this column is denoted by
boys. Okay, because number of boys is 700, so here we mention 700 and we also painting in the column. जैसे हमने ये मेंशन किया नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हम लोग क्या डिनोट करेंगे, तो क्रॉस लाइन इन कॉमन स्ट्रीम, एंड इन कॉमन स्ट्रीम नंबर ऑफ गर्ल्स आर 600, सो इन कॉमन स्ट्रीम 600 दैट मीन्स हियर. ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हमने क्या डिनोटेड किया है स्टूडेंट्स, सर्कल्स. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गर्ल्स के कॉलम में हम लोग सर्कल्स नोट डाउन कर देंगे. सो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में क्रॉस लाइन वाला वो बॉयज़ के लिए है और सेकंड वन ही सर्कल वाला है वो गर्ल्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो इन कॉमन स्ट्रीम वी ऑलरेडी प्रेजेंट द कॉलम for the number of boys and number of girls. Okay students, then second in science stream 500 are boys and 400 are girls. So here also mention like commerce stream, so 500 that means here, so we prepare a column for the boys and it's denoted by cross lines. Okay students, and second one is number of girls in science stream is only 400, that means here जो 400 है उसके सिमिलर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, सर्कल जो हमने गर्ल्स के लिए आइडेंटिटी शो किया है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. ओके, सो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का कंप्लीट हो गया हमारा ग्राफ. देन इंजीनियरिंग कॉलेज, so in engineering number of boys are 300 and number of girls are 100, that means 300 here and 100 are girls, so 100 here. Clear, this column is for boys and second one is for girls. Okay, in arts, okay, in arts 200, number of boys are 200 and number of girls are 300, that means 200 here and 300, that means here. Okay students, सॉरी हियर हमें ये गर्ल्स के लिए तो हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिटी दी है हमने स्टूडेंट्स, सर्कल्स की, तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल्स. ओके, सो क्लियर फॉर द आर्ट्स फैकल्टी. देन मेडिकल फैकल्टी बोथ आर सेम 100 100, सो this column for the boys and this column for the girls. Okay, and last one is law. In law number of boys are 100 and number of girls are 200, so this column for boys and this one is for girls. Okay students, so here हमारा ग्राफ प्रिपेयर हो गया, बट अब हमें क्या नोट डाउन करना अभी भी रिमेनिंग है स्टूडेंट्स, स्केल मेजर जो इम्पोर्टेंट है ईच एंड एवरी ग्राफ में. सो हियर वी मेंशन द स्केल मेजर ऑन एक्स एक्सिस is equal to faculty, because on n axis we mention the faculties, and on y axis 1 centimeter is equal to 100 students. Okay students, हमने y एक्सिस पे क्या मेंशन किया है, 1 सेंटीमीटर के गैप में हमने 100 स्टूडेंट्स मेंशन किया है. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर मल्टीपल बार डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स की जितने टाइप की आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके लिए आइडेंटिकल साइंस दे देनी है, लाइक दैट बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स. ओके, देन आपको क्या करना है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ प्रिपेयर करनी है, लाइक दैट सिंपल बार डायग्राम. ओके, फिर ये प्रिपेयर हो जाने के बाद आपको लास्ट में क्या मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ईच एंड एवरी ग्राफ इज स्केल, ये आपको मेंशन करना है.
So I hope you all are understood how to prepare multiple bar diagrams. So students, please note down in your notebook, and this graph is prepared on your graph book. Okay students, so I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss next type, third subtype of one dimensional diagram, simple divided bar diagram. Okay students, thank you.